Okay, so you can see here we are giving input signal or input whatever your input signal we are giving on this terminal X. Okay, in the your differential amplifier and एक हमारा feedback आ रहा है. Okay, जो output side से feedback आ रहा है वो हम दे रहे हैं negative terminal पे. And after that we are at this point we are getting this X1, and after that we have integrator, and after integrator we have this X2. Okay, and after that at the comparator side we have this X3 over here, so same will be here, and here we have so X2 X3 X4 just for your explanation, for understanding. Okay, कि क्या result वहाँ पे मिल रहा है. Okay, so this part we have already discussed. Okay, why this is sigma, why this is delta. Okay, so जैसे होगा क्या, input signal जैसे ही आएगा it will compare with the feedback part and it will give you the X1. Okay, then X1 will go to this integrator and the resultant will be X2. Now this X2 is the comparison of this X2 and this terminal. Basically this is 0. Okay, so plus minus, because this is a comparator, 1-bit ADC, analog to digital comparator converter. Okay, so X2 will compare with this negative terminal voltage or negative terminal value, and it will give one bit, whether it is 1 or 0. Okay, so obviously for getting the 1, okay, अगर हमें यहाँ पे at the X3 if you want to the majority of the output of the data majority of ones, तो obviously क्या होना चाहिए, जो X होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए इस फीडबैक वैल्यू से. ओके, जब तक ये वैल्यू इन दोनों का पॉजिटिव नहीं आएगा आउटपुट पे, ओके, तब तक आपको वो 1 नहीं मिलेगा. सो फॉर गेटिंग द मेजॉरिटी वैल्यूज 1 you have to require the input value X is always greater than with the differential जो हमारा यहाँ पे फीडबैक आ रहा है. ओके, सो पहले हम चेक कर लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X1 X2 X3 X4. क्लियर? सो फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस X1 X2 X3 X4, okay, let firstly discuss working of this. So same X1 is calculated with the help of the differential amplifier. So as I told you, X1 is calculated over here. Okay, so X1 क्या होगा, this X and यहाँ पे जो भी feedback आ रहा है उसका difference. So same X1 is calculated with the help of the difference amplifier. Now X1 transfer to integrator circuit. This integrator add the X1 value with the previous value of the integrator. So you have to remember कि जो X1 X2 की value होगी, okay, so X2 will be here, you have X1 is already given and this one will added with the X and minus 1. Okay, or in other words we can say X1 and minus X. Okay, so जो भी previous value रहेगी, so for example I have taken only this कि present value X1 है और कोई previous value रही होगी X and minus 1, so उसके साथ उसे add कर दे. Third point, now the after integrator output X2 goes to comparator circuit. Okay, so this is the value of the X2. X2 will goes to this comparator circuit. Okay, comparator circuit compare the X2 with 0 volt. If the difference is positive, the comparator output will be 1. If the difference is negative, comparator output will be 0. Okay, so जो भी X2 की value आ रही है, so if X2 is positive, output will be 1. If X2 is negative, the output will be 0. In the case of negative, in the case of positive. Clear?
So same I have mentioned over here कि आउटपुट क्या होगा 1 और 0 अकॉर्डिंगली हो जाएगा. क्लियर. नाउ x3 वैल्यू जो आपकी कैलकुलेट आई will go to the 1 bit DAC digital to analog converter and it will give a equal to +1 or a equal to -1 on the basis of if x3 is 1, x4 will be +1, if x3 is 0, x4 will be your -1. क्लियर. सो जो भी यहाँ पे x3 की वैल्यू आ रही थी वो यहाँ से आ रही थी बेस्ड ऑन दी x2. x2 अगर पॉजिटिव होगा तो आउटपुट पे 1 होगा, x2 अगर नेगेटिव होगा आउटपुट पे 0 होगा. अगर यहाँ पे 1 है तो x4 की वैल्यू +1 होगी, अगर x3 की वैल्यू 0 है तो इसके लिए x4 की वैल्यू क्या होगी -1. सो +1 and -1 will go at this terminal. Okay, so this is the processing of the getting the bit stream. Okay, so अगर इसी चीज को हम एक ग्राफ से फ्लो चार्ट से समझें so easily we can see x functional of flow chart. x हमारा इनपुट जा रहा है as per the your circuit diagram you can see here. Okay, x is your input ले लिया हमने. so यहाँ पे क्या मिलेगा x1 की वैल्यू क्या होगी this x minus of this one. So you can see here in flow chart x1 equal to x minus x4. ठीक है. So this x1 equal to क्या हो जाएगा x minus x4. x is your input signal जो भी दे रहे हो, x4 can be +1 or -1 on the basis of x3. so वो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, वही वैल्यू हमारी x में से माइनस हो जाएगी. so that will be your x1. now x1 किस में जा रहा था इंडिकेटर में. so you can say here x1 हमारा कैलकुलेट हो गया. ये एक तरह से किसका पोर्शन है इंटीग्रेटर. so वहां पे क्या आ रहा था x2 आ रहा था. ओके, सो x3 इक्वल टू x1 प्लस जो भी प्रीवियस वैल्यू वहां पे रही होगी. सो दैट इज योर x2 and -1. करंट वैल्यू अगर हमारी x2 है ओके तो प्रीवियस वैल्यू x2 and -1 रही होगी. सो आफ्टर इंटीग्रेट वी विल गेट दिस x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 जो हमारा डिफरेंशिएशन से वैल्यू आ रही थी प्लस प्रीवियस वैल्यू जो रही होगी. सो करंट अगर x2 है तो प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी x2 and -1. okay, after that it will go through in the 1 bit DAC. okay, so 1 bit DAC में दो कंडीशन हो सकती है, या तो x2 जो आपके आ रहा है वो 0 से बड़ा हो सकता है या उससे कम हो सकता है. so if x2 is greater than 0 x3 will be 1. यही देखा था हमने. if x2 is less than 0 x3 will be your 0. ठीक है. now x3 this x3 will go x4. okay, you can say here in this diagram 1 bit DAC में जाएगा. okay, so if x3 is positive x4 की वैल्यू क्या होगी +1 होगी. if x3 is 0 x4 की वैल्यू क्या होगी -1 हो गई है. and it will go further into the next process. okay, so ये it will continue until unless you will get the whole conversion. okay, so in this way this sigma and delta ADC work. advantages जो है वो क्या है high resolution and the low cost. okay, so for this you have to remember this circuit diagram and the functionality of the circuit कि कैसे कैसे हो रहा है. so for understanding you can remember or you can learn about this flow chart. okay, so कैसे कैसे values हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको you will get the bit stream over here. okay, so let's see you are getting 1 0 1 1 according to the value of the x. okay, so this is all about your sigma delta ADC.